guys, welcome back to my channel. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक इवेंट हुआ था मिसेस महाराष्ट्र 2021। उसमें मैं टॉप की कैटेगरीज में सिलेक्ट हो गई हूँ एंड दिस आप यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हो। मैंने क्राउन जीता है। got a sash. I also got Mrs. Confident and I'm so happy today. मुझे ऐसा लगता है कि I've achieved nicely and I'm yet to achieve more things in my life. So when you win, I want to give you all some tips कि आप कैसे कोई भी pageant जीत सकते हो या top 10 में या top 12 में आने की कोशिश कर सकते हो, so that even you have that beautiful glittering crown on your head. तो आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट 2 चीजें बताने वाली हूँ जो आप आपके दिमाग में एकदम फिट कर सकते हो. So the first thing what I want to tell you is just breathe in and out. That's it friends. जब भी आपको परफॉर्मेंस देनी है ऑन द स्टेज, जब भी आपका इंट्रोडक्शन आपको देना है, एक डीप ब्रेथ लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज दैट्स हाउ यू किल योर नर्वसनेस. ऑफकोर्स स्टेज पे जाने के बाद आपको वो नर्वसनेस होती है एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन बिकॉज अगर आप नर्वस नहीं हो तो डेफिनेटली आप ओवर कॉन्फिडेंट हो एंड ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता बिकॉज लास्ट मोमेंट में आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो कभी भी ब्लैंक हो सकता है. सो यू हैव टू बी वेरी प्रॉम्प्ट, थिंकिंग नाइस एंड always keep that positive attitude on your face, in your mind and your soul. So ये आपको करना है कि deep breath लेना है in and out. Always think positive. And the second tip what I want to tell you is before going on the stage, don't talk to anyone. Yes friends, and keep that in mind. Whenever there are a lot of girls, 60-70 girls आपके साथ होंगे stage पे and you have to do a lot of performances. Everybody will have some or the other kind of issue. मेरा hook निकल गया है, my heels are not good, or my makeup is not good, my hair is not good. This is not the time for you to think about all those things when you're on the stage. You're going to enter the stage. So don't talk to anyone. Even if someone comes and tells you that your hair is not good, you're looking good, or your eye makeup is not good, your lipstick, your makeup is too loud, or anything which can disturb your aura or your negativity, please avoid that. Don't listen to anybody. I must tell you that. Just keep focus on what you're going to say and you will rock it. Definitely you're going to rock that. So these are the 2 important tips you should keep in your mind before entering a stage. Next time I'm going to tell you what else you can prepare and how you can prepare for your pageant journey. Till then, stay tuned, take care and do subscribe my channel.